Hello, welcome to the channel. So, in the last lecture, we have discussed about few vector spaces like the matrix space and the uh, space of n tuple. Now, continuing with the same, we are now going to discuss polynomial space. So, as the name suggests, polynomial means what? It is a space of polynomial form. Means a0 plus a1x plus a2x square up to so on an xn for all ai belonging to f, right? So it is a polynomial space. So now let us check whether it is a vector space or not. So is a vector space. Now let us check by two properties, vector addition and scalar multiplication. So let us suppose, let p1x is equal to a0 plus a1x plus a2x square up to so on an xn. P2x is equal to p1 plus b0 plus b1x plus b2x square b2x square up to so on bnxn. So now addition p1x plus p2x is a0 plus b0 plus a1 plus b1x plus an plus bn whole power xn, right? Now scalar multiplication. Sorry, scalar multiplication is lambda times of p1x, means lambda times of a0 plus lambda times of a1 plus lambda times of a2 x plus x square plus lambda times of an xn. So therefore this is a, hence it is a vector space. Now we can define polynomial space up to degree n, Pn. Wait a minute. Polynomial space. What is happening? Polynomial space up to degree n. Denoted by Pn of f. This is the proper notation of polynomial space up to degree n. So now it is also the same as the previous one. We can let the two polynomials up to degree n and then
summation both of them, sum both of them. So now a2x2 plus anxn p2x is a0 b0. Wait a minute. b0. Wait. Pnxn. So basically same as the previous one. We will do the vector addition as p1x plus p2x. This is equal to a0 plus b0 plus a1 plus b1 times x plus a2 plus b2 times x square up to so on an plus bn times xn, right? So here what we got is vector addition is satisfied. Now scalar scalar multiplication. Scalar multiplication involves multiplying lambda with p1x. So lambda times of a0 plus lambda times of a1x1 plus lambda times of a2x2 up to so on lambda times of an xn. Hence it is verified. So this is what polynomial space up to degree n. Now बात करते हैं फंक्शन स्पेस की. फंक्शन स्पेस में देखते हैं तो फंक्शन स्पेस क्या है. फंक्शन स्पेस को डिफाइन ऐसे करते हैं. अगर एक फंक्शन है f ओवर द फील्ड f सच दैट f जो है वो मैप कर रहा है f फील्ड f से f पे, देन वो फंक्शन है. सो लेट अगर एक फंक्शन लिया सपोज f1x, एक फंक्शन लिया f2x, सो जब दोनों को सम करेंगे वेक्टर एडिशन जब करेंगे तो क्या आएगा f1 प्लस f2 टाइम्स x fm प्लस f2x करेंगे तो fm प्लस f2 टाइम्स ऑफ x आएगा. सिमिलरली स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो लैम्डा टाइम्स ऑफ f1x इज लैम्डा ऑफ सॉरी वेट मिनट lambda times of f1 into x is lambda of f1x. So ये था अपना पॉलिनोमियल स्पेस अप टू डिग्री n और फंक्शन स्पेस की बात. अब देखते हैं इसी के आगे एक और टॉपिक जो कि है 6 नंबर. इट इज 6 नंबर तो आई थिंक हो गया है.
एक मिनट। पॉलिनॉमियल स्पेस 4 था, अप टू डिग्री n वाला 5 था, और यहाँ पे ये 6 था। फंक्शन स्पेस नाउ 7th sequence space. So now okay, so now v over f is equal to set of sequence xn such that xn belonging to f is a sequence space. Now is a vector space. Now let us check vector addition. Vector addition. Suppose हमने दो सीक्वेंस उठाई xn और yn और दोनों को सम करा, तो हमें क्या मिला? एक ऐसी सीक्वेंस जिसके सारे एलिमेंट्स इंडिविजुअली सम अप हो गए, राइट? तो ये वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया। दूसरा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन को देखने के लिए क्या करते हैं, अपन ने एक लैम्डा उठाया और उसको स्केलर को एक्सन से मल्टीप्लाई करा, तो वो लैम्डा सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया। सो मतलब ये चीज जो है वो एक वेक्टर स्पेस बना देगी, और जीरो वेक्टर तो हमेशा होगा ही सीक्वेंस में, तो वेक्टर स्पेस जो है वो बनेगा, राइट? अब अपन इसके बाद ये हो जाता है यहाँ पे खत्म। अब इसके बाद अपन देखेंगे वेक्टर सब स्पेस नेक्स्ट लेक्चर में, वेक्टर सब स्पेस, राइट? सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही बने रहिए, पूरा कोर्स जो है वो धीरे धीरे करिए कंप्लीट होगा, और ये जो है कोर्स सभी एस्पिरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सो एक शुरुआत है अपनी तरफ से, नहीं तो साथ दीजिएगा और बने रहिए एडुफिक्स के साथ।